So good evening and welcome. Welcome to Divine Healing Valley Spirituality and Healing Meet. And we are back with our Wednesday session. And the topic for today is the 4 paths of Yog. तो हमारे योग मार्ग के जो 4 मार्ग बताए हुए हैं हमारे शास्त्रों में, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। पर इस सबसे पहले हम ये जान लें कि योग क्या है। हाँ, तो योगिनी जी भी हैं यहाँ पे। तो योग का मतलब क्या है? योग का मतलब है कनेक्शन with the divine. Yeah, so that is when we say yog matlab connection ban gaya. So yog essentially means association or connection with the divine, and the essence of divinity in us is blossoming. That is what is yog. Yeah. तो जब भी हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे आगे बढ़ेंगे तो हम किसी ना किसी एक पाथ पे चलते हैं। सबसे कॉमन और सबसे यू कैन से मोस्ट कॉमनली यूज्ड पाथ is the path of bhakti, path of love. So bhakti yoga is the most common that I would say, which is there is no qualification required. There is no qualification required. आपके जो भी इष्ट देव हैं आप उनके आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और अपने हिसाब से करते हैं, कोई रूल्स नहीं है उसमें. So you are absolutely free to flow with your love for your divine, and that is the bhakti yoga. So that is the most common for most people. And that is how we get introduced. जैसे अगर आप मेरी बात भी अपने बारे में भी मैं बात करूं या आम जनता की बात करूं, generally we are brought up in a family where we go to a religious place on a particular day or a particular time, and then we also have a small worship place of worship at our home. So हम सुबह सुबह उठ के कुछ दिया जलाते हैं, जैसे है ना, फिर अगरबत्ती जला लिया, 2-4 मंत्र हमने कर लिए, भक्ति कर लिए. So that is how we start getting introduced to a superpower above us, and we connect with that. So that is how we connect with the divine. Yes, everybody okay with that? That is our first introduction. फिर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं भी हम अपनी इंटेलिजेंस, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हम जागृत अवस्था में आते हैं. That means we become aware, we become conscious of our spiritual journey, and then we choose a path. And that path most commonly is the Bhakti Yoga, because that is how we get introduced to it. The Bhakti Yoga is the most common path. यहाँ पे क्या होता है? It is the path of devotion, path of surrender, path of love. आप आपके इष्ट देव हैं, उनको आप फॉलो करते हैं. फॉलो करते हैं मीन्स, अब स्पेसिफिकली बोलूँगा तो उस मंदिर है, जैसे अगर आप शिव के भक्त हैं, शिव जी के भक्त हैं, तो आप शिव मंदिर में जाएंगे. आप राम जी के भक्त हैं तो आप राम जी के मंदिर में जाएंगे. हाँ, so there are different, I'm talking only of the Hindu system, because otherwise we also have the place of worship like the church or the mosque or wherever you want to go, Gurdwara, तो सब जगह जाते हैं, and we connect with the path of love. So everybody okay with that? That is how we start. Yes, the path of love or path of bhakti is the first introduction to spirituality. Now I will give an opportunity to share from all of you, what is your connection or your understanding of connecting with the divine. मतलब आप डिवाइन के साथ कनेक्ट करने के लिए कौन सा पाथ आपने चूज किया है या करते हैं या करते थे, और अभी का क्या स्टेटस है. Then we will move on to the other 4 parts. Why I said Bhakti Yoga only? Because that is the first and the most important one, which normally we get introduced to by our parents, by our family, by the society where we are brought up, and conditioning thoda hota hai, lekin this is the first introduction that we get when we get introduced to the Bhakti Yoga. Yes, so yes, anybody who wants to share, अगर आपका experience यही है तो आप share कर सकते हैं, कुछ अलग है तो जरूर share करिए, so that we can also listen to you. Yes, and let me first welcome the people who have just joined in. So welcome Gurkirat ji, Tarun ji, Naveen ji, and Pooja ji, welcome. If you want to share something about yourself, please do that. Otherwise you can straight away come into the discussion. What is your experience of connection with the divine? That means which path of yoga are you walking? Anybody who wants to share? अपना एक्सपीरियंस बताइए कि आपका डिविनिटी के साथ क्या एक्सपीरियंस है, कौन से पाथ पे आप चले हैं या चल रहे हैं, और क्या आपको फायदा हुआ है या क्या आपका एक्सपीरियंस है, कितने साल हो गए हैं. एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर. ओके, यस विजय जी, गो अहेड.
आप म्यूट में हैं। Yeah, so शशिधर जी, भक्ति योग से तो मैं इतना कनेक्ट नहीं हुआ क्योंकि एज यू राइटली सेड इट कम्स फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस फ्रॉम चाइल्डहुड। तो मेरा ख्याल आई कनेक्टेड मोर थ्रू ज्ञान योग, attending different classes and different presentations. And for me, the journey started in 2011. Okay, very good. Yeah. So Yeah. 15 strong years of sadhana. Yeah, very good. I will not call it a sadhana. I enjoy. And yeah, I learned. So I don't know whether you call it sadhana. So I like to associate. I like to listen. Perfect, sir. See, when you say you have been involved in this on this path of Gyan for Gyan Marg for the since 2011, so yes, you are a साधक, तभी हम जुड़े हुए हैं, है ना? तो साधक हैं तो साधना है। हाँ, कितने हाई लेवल पे है या कितने ऑर्डिनरी लेवल पे है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट साधक की कैटेगरी में तो हम आ ही गए द मोमेंट यू पिक अप एनी ऑफ दिस मार्क, राइट? सो हम सब साधक है, वरना हम यहाँ पे होंगे ही नहीं, right? So if you are interested in a topic like this for 1 hour, you are taking your devoted time from your life to be here and be in the satsang for 1 hour, you definitely are a sadhak. So first let us acknowledge that. Good job done. Huh? We are already here. Very good, Vijayji. Yes. So that is Gyan Yoga. We will come to that, details of that. Yes. And anybody else who wants to share? Yeah, I would like to share Yes. that it is, I mean, not in the same proportion. I think Bhakti Yoga, when I, go for daily Shabads and Bani and this thing, Yes. that is what my understanding is Bhakti Yoga. Yes. And Gyan Yoga, reading Gita daily and having a discussion on this thing, that is, we enhance, we clear our doubts. Even this satsang, this video is also, I think, is a part of that Gyan Yoga. Yes. And Karma Yoga is when K2, K4 since 2004, we are putting everything, whatever the Gyan is, limited Gyan we have is, we have put it into action. That is what I feel that I call it Karma Yoga. तो वो daily वो तीनों का combination चल रहा है. तो कुछ ऐसा नहीं कि एक ही path है, but that is Very what good. बहुत बढ़िया. Let's acknowledge Kapil ji. That's a very good, you can say, blend of the sadhana. In fact, Swami Vivekananda would always say that the best sadhana is one which brings into harmony all the four paths. So very well done, Kapil ji. अगर आप आपके awareness में हैं और आपकी choice में हैं और आपकी decision में हैं कि चारों या तीनों योग मार्ग में चलना है और तीनों को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ना है, that is a perfect sadhana, I would say. Yeah. So let's acknowledge Kapil ji for that. Sir, what is the fourth one? Bhakti, We'll come to Gyan that. and We'll come to that. Okay. Yeah. Okay. Yes, sir. अभी मैंने इंट्रोड्यूस किया नहीं है पूरे टॉपिक को, मैंने अभी सिर्फ एक भक्ति योग को ही लिया था, बिकॉज दैट इज कॉमन टू एवरीबॉडी, सो आई थॉट आई विल स्टार्ट विद दैट. Yes, Leslie, anything you would like to share about your spiritual journey? Yes, myself, Pooja. Yes, Pooja, you go ahead. आप शीतल हैं, पूजा हैं? नहीं, शीतल मेरी बेटी का नाम है, एक्चुअली जूम उसी के नाम से आ रहा है. Okay, that's fine. तो मैं हैव नॉट चेंज दैट. Okay, yeah, go ahead. एक्चुअली वैसे तो देखिए बिजी लाइफ शेड्यूल के हिसाब से, मतलब बच्चों का एजुकेशन और थोड़ा काम और इस सब में इतना तो नहीं होता, बट ऐसा मुझे लगा कि लास्ट 3-4 ईयर से ना मुझे इनर अवेकनिंग को लेके, मतलब सराउंडिंग से ना नॉलेज डेवलप हो रहा है कि मतलब एवरीथिंग इज विद इन योर सोल एक्चुअली, एंड यू शुड बी द मतलब योर ट्रू सेल्फ, आपका ओरिजिनल सेल्फ को लेके ही. और जब आप अपनी सोल को जान लेंगे तो ईश्वर को आप अपने आप ही जान लेंगे, और ईश्वर गिव यू द strength in your soul, and फिर when you are awakened then you will automatically divert toward the humanity and services actually. That's fine, that's absolutely fine. तो लेकिन अगर आप इन योग के मार्ग को अगर पकड़ेंगे तो कौन से मार्ग को आप बोलना चाहेंगे कि दिस इज माय अभी फेवरेट? फिलहाल तो देखिए एक्चुअली भक्ति योग तो शुरू से ही आप कह लीजिए कि मतलब बचपन से ही पूजा पाठ का थोड़ा मतलब बहुत ज्यादा डेंसिटी तो नहीं, थोड़ा करते रहते, रेगुलर फॉर्म में करती हूँ मैं. बट अब जो ज्यादा इंटरेस्ट आता है वो मेडिटेशन की तरफ ज्यादा आता है, क्योंकि मेडिटेशन से थोड़ा सा इनर कुछ ज्यादा टच होता है, ऐसा मुझे लगता है. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. सो पूजा जी,
welcome, and let's acknowledge Pooja ji for her contribution. So the meditation part, what you said, is called Raj Yog, और ध्यान योग, जहाँ पे हम राज योग में बोल सकते हैं, या फिर पतंजलि योग सूत्र के हिसाब से जो अष्टांग योग की बात करते हैं. So meditation is the seventh limb of that Ashtang Yoga. Yeah, so we will come to that, but that is part of Raj Yoga. So you have been introduced to basically Bhakti Yoga and Raj Yoga, which is absolutely perfect. So let's welcome Pooja ji in the name of Sheetal. Okay, got it. Yeah. But Pooja ji, आप पहली बार आ रही हैं या पहले आ चुके हैं आप? Myself Pooja, yeah, my daughter. फर्स्ट टाइम आई हूँ एक्चुअली. मैंने उनको देखा, जो अमित जी हैं उनका मैंने देखा था आज, वैसे हमारी सोसाइटी ग्रुप में था, तो मेरा इस तरफ इंटरेस्ट अब आ चुका है. एक्चुअली इस तरह की कभी चीजें होती है तो मैं मतलब क्यूरियोसिटी में देखती हूँ कि व्हाट एडिशनल इज देयर. Very good. So you are coming here for the first time and you have been introduced by Amit first ji. time. All right, very good. Let's welcome Pooja and also congratulate Amit ji because उनकी रिक्वेस्ट पे आप आए हैं. Very good. पूजा जी, आप जीजे में रहते हैं आप? जी जी जी, मैंने आज ही एक बार और देखा था पर उतना नहीं हो पाया. फिर आज मैंने देखा तो उसमें योग का दिया हुआ था, 4 form of yogs, and that is why. Very good. So welcome. Great. Anybody else who would like to share? Okay. So now what I will do is let me get to the yes, Leslie, go ahead. Well, I do not know which age I started, but I was very young at the age of 10 when, like I started kind of having very weird kind of imaginations. And मेरा इंट्रोस्पेक्शन शुरू से बचपन से था. I never used to take things lying down. कुछ किसी ने कुछ बोल दिया. My parents also tried to put me in a certain kind of religion वाला उसमें, तो उन लोग से भी बहुत डिबेट करता था. So basically introspection मेरा continuously चलता था. And at the age of 15 only I started, I do not know where it came from. I started meditating, thinking कि मैं अपने आप को हवा में उठा पाऊंगा मेडिटेट कर करके. पता नहीं कहाँ से ये बिलीफ आता था, तो वो बहुत करता था. But at the age of 21 or 22, that was when it became very evident to me about the introspection that I had, about this spiritual quest that I had. And this was when I was reading this first time, I was reading Jiddu Krishnamurti's book. Perfect. And since then, it is maximum amount of introspection that I went into. And then when I went to Landmark, which again gave me a lot of insight into various things. And so basically, age-wise, मुझे नहीं मालूम कब शुरू हुआ, but it became very, very clear and evident after when I did Vipassana, after immediately Landmark, which Shashi, I think you know. Yes. तो उसके बाद when I did Vipassana, उसके बाद कोई रुकने का नाम नहीं था. फिर तो सारी किताबें चाट डाली, सारे मेडिटेशन सीख डाली, तो वो सब कुछ करना शुरू हो गया. So it's been there. The journey is forever there, and the hunger keeps growing even bigger and bigger, more and more. Absolutely so that's Absolutely how it perfect. is. So if I have to outline the two paths that you have been following, it is basically Gyan Yoga and Raj Yoga. So that is a combination that you have been following. So when we talk of meditation, Dharana, Dhyan, Samadhi, that is part of the Raj Yoga. And of course, if you start questioning and understanding introspection, all that is part of Gyan Yoga. Yes. So perfect. Let's acknowledge Leslie for that. Very good. Anybody else who wants to share? Gurkirat ji, Bhavna ji, anybody who wants to share? All right. So what I will do now is let us move into the details of the 4 paths. So everybody clear on the Bhakti Yoga? We talked about Bhakti Yoga. Now Bhakti Yoga is when you can say God of religion. That is what Bhakti Yoga is. So Saguna Sakar, that is how we call that. Saguna Sakar is God in name and form. So you can have your Ishtadev. So, and then you worship your Ishtadev. So Lord Shiva, Lord Krishna, Lord Rama, Hanumanji, Devi Ma, whichever form, name and form you want to, you are attached to, or you are aligned with, आप उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, वंदना करते हैं, whatever, in whichever form you do. So you go to the temples, you keep fast, you do bhajan kirtan, आप सुबह सुबह दिया जलाते हो,
आप उनका नाम जप करते हो, आप माला फेरते हो, ये सब किस में आएगा? ये सब आपके भक्ति योग में आएगा। आप भजन कीर्तन करते हो, सत्संग में जा रहे हो, ये सब भक्ति योग में आएगा। एवरीबडी क्लियर ऑन द भक्ति योग? यस, राइट। Then we move on to the path of a yogi. Path of a yogi means not you don't have to become a yogi, but that is a path of Ashtanga Yoga. So which is Patanjali's Yoga Sutra, where we talk of the 8 limbs of yoga. And I'll just name that. I will not get into the details of that. So first is Yam, Niyam, Asan, Pranayam, Pratyahar, Dharana, Dhyan, Samadhi. Yes. So Dhyan is what we refer to as meditation in our normal terms. तो अगर आप meditation में बैठते हो और ध्यान करते हो तो वो राज योग है या आपका अष्टांग योग है जिसके ऊपर आप फोकस कर रहे हो. So this is the path of a yogi. And what are they doing? आप एक तरीके से तपस्या कर रहे हो. तपस्या मीन्स जंगल में नहीं जाना है, घर में बैठना है, 1 घंटा मेडिटेशन करनी है या 40 मिनट मेडिटेशन करनी है, और उस साइलेंस में आपको एक्सपीरियंसेस होते हैं, राइट? आपको अनुभूति होती है, आपके अंदर इनसाइट्स क्लियर होते हैं, आपके माइंड क्लियर होता है, एंड यू मूव योर कॉन्शियसनेस हायर थ्रू द चक्रास. सो दैट इज अ path of Raj Yoga. If you have heard of Brahma Kumaris, they talk of Sahaj Samadhi and the Sahaj Yoga, which is also the Raj Yoga meditation which they do. तो ये आसान तरीका है एक तरीके से, but meditation is part of the Raj Yoga. Yes, the path of meditation, ध्यान योग भी बोलते हैं इसको. So that is the second path which people follow. So along with the meditation, people sit in ध्यान, भगवान का नाम जपते जपते ध्यान में चले जाते हैं, एंड नाम जप करते करते तो आपने राम नाम का जप करना शुरू किया और आपको ध्यान लग गया. दैट मीन्स आप ध्यान में लीन हो गए. तो यहाँ से भी आप मेडिटेशन वाले पार्ट में जा सकते हैं. तो भक्ति योग से भी भक्ति समाधि मिलती है और राजयोग से भी ध्यान की समाधि मिलती है. क्लियर है ये दो पार्ट? आई होप नो क्वेश्चंस हियर, बिकॉज दीज आर द टर्म्स व्हिच वी आर यूज्ड टू नॉर्मली, राइट? Now another part that we talk of is Karma Yoga. Now in Bhagavad Gita, Lord Krishna has explained that in very, very elaborate terms. What is the nature of a Karma Yogi and what is Karma Yoga? हम सब कर्म करते हैं शरीर से. Yes, कर्म करते हैं. तो कर्म योग का सबसे आसान अंडरस्टैंडिंग ये है कि हमारा अधिकार सिर्फ कर्म पे है, कर्म के फल पे नहीं है. So when you do the efforts to the best of your ability and capability and leave the results to the divine will. क्यों? क्योंकि कर्म फल पे मेरा अधिकार है ही नहीं, मेरा अधिकार सिर्फ कर्म पे है. So I focus on the action and leave the results to the divine will. Then I am on the path of Karma Yoga. Now Karma Yoga is when I am free from the karmic debts. यानी कि मैं कर्मा के बंधन में नहीं फंसूंगा. नॉर्मली कर्म करते हैं तो कर्म के साथ साथ क्या होता है, हमारा कर्तापन आ जाता है. कर्तापन के आते ही हम कर्ता और भोक्ता बन जाते हैं और कर्म फल में, कर्म बंधन में फंस जाते हैं. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ए कार्मिक डेट, कार्मिक अटैचमेंट्स, कार्मिक बॉन्डेज, एंड वी गेट एंटैंगल्ड इनटू इट. द अटैचमेंट इज इनहेरेंट in the actions that we do with any kind of I, me, myself, है ना. तो मैंपन और मेरापन से जो अटैचमेंट आती है उससे आपके कार्मिक डेट्स, कार्मिक बॉन्डेजेस बनते हैं. तो जब आप रिजल्ट्स छोड़ देते हैं डिवाइन पे तो यू बिकम फ्री फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ द कार्मिक बॉन्डेजेस. So that is one aspect of karma or karma yoga, which is explained in the Bhagavad Gita. So this is the third part. So we have talked of Bhakti Yoga, we have talked of Raj Yoga, and we have talked of Karma Yoga. Yes, I'm just giving the basic outlines. I'm not going into the depth of it. And now we come to the fourth part, the fourth mark, which is the Jnana Yoga, the path of wisdom, path of knowledge. Who am I? You inquire into the nature of मैं हूँ कौन, who am I, and how does God
what is God? So who am I? Who is God? How does God exist? How does the whole universe exist? So these questions and the inquiry into these is the essence of Gyan Yoga, the path of wisdom, right? So you get to know your own nature and you get to know the nature of the Paramatma. तो आत्मा और परमात्मा का की जो इंट्रोस्पेक्शन है, जो स्टडी है, जो क्वेश्चंस हैं, दैट विल गिव यू द इनसाइट्स. तो उसमें जो डिवाइन विजडम आपको मिलती है, उससे आपकी जिंदगी का, लाइफ के सारे पजल्स सॉल्व हो जाते हैं. यू सॉल्व द पजल ऑफ लाइफ, you get clarity, and that is what has been the foundation for what Vijayji shared and what Leslie shared, and I'm very sure Amit ji also will share later on. So Gyan Yoga is something which is absolutely very, very strong foundation for many sadhaks. So Gyan Yoga is another important aspect of the yoga. Yes, so these are the 4 paths, and those who have studied Bhagavad Gita, those who have studied Ashtavakra Gita, or they are inclined towards Advait, Vedanta wisdom, so you should know that you are deeply in the search of the answers which is guided by the Gyan Yoga. Yeah, and just for the sake of information, we are planning a spiritual retreat on Vedanta wisdom spiritual retreat in Rishikesh starting from 13th, which is 13th March, Friday to Sunday, and many of our participants here are participating in it. So that is part of the Gyan Yoga. Yes, so we're going to look into the details of who I am, how the universe exists, how are we connected with the divine, and how the divine wisdom can free us from all the bondages. So that is what is Gyan Yoga. Yes, so I've given you an introduction to all the 4 paths. Anybody who has any kind of question can please share your views and your understanding, and then we move on deeper into the subject. Yes, कौन बोलना चाहेंगे? Any questions on the 4 paths first? The 4 paths should be clear. Then we look into which path is my calling. We will come to that next. कि कौन सी path मेरी calling है? And that only you can say. I can only tell you these are the 4 paths. Your calling will be there, and based on the level of consciousness that you are in, one path will call you and you will move on that. Correct? So if you have any confusion, if you are very clear about it, whatever it is, you can share. So Galaxy A23, कौन है? In case you want to share. Priya ji. अच्छा, प्रिया अलग है, प्रियंका अलग है. Okay. Yes. Anybody who wants to share? Bhavna ji, Gurkirat ji, Pooja ji. Yes. No questions? Okay, Leslie, go ahead. I'm just saying this, whatever stage I am in, for me, there is nothing very clear कि मेरे को बस इस रास्ते पे चलना है. Rather मेरे को ये जो आपने 4 रास्ते बोले वो बहुत evidently बहुत समझ आए हैं और बहुत खुल गए. All these 4 चारों रास्ते बड़े आराम से खुल गए, तो मुझे चारों को पकड़ के चलना अब अच्छा लगता है. मतलब पहले ये थी भूख थी सिर्फ ज्ञान की, अब ध्यान में घुसना भी बहुत अच्छा लगता है. अब इवन सरेंडर करके भक्ति में भी जाना बड़ा अच्छा लगता है. Yes. तो आई पर्सनली फील मुझे अब पता नहीं कि चारों एक तरीके से बैलेंस करके चलने में मजा आ रहा है. सो आई एम नॉट वेरी क्लियर कि मैं एक पकड़ रहा हूँ. Absolutely fine. Absolutely fine. Like I shared before, Swami Vivekananda was a very, very strong, strongly he would suggest that you should have a sadhana which is a harmony of, which keeps into all the 4 paths into harmony. That means you are following all the 4 paths because you don't know where your consciousness will rise faster. So practice all the 4. It's absolutely great, right? It's absolutely good. Very good. In fact, I've been doing that for quite some time. So of course, when I started off, it was more like Bhakti Yoga, and then went on to the meditation part. So it was more like Raj Yoga.
and then went on with the, since I was into spiritual healing, Reiki healing, quantum healing, karmic healing and all that, so it was part of the Karma Yoga, yeah, to leaving the results to the divine, living my life from there. And then of course Vedanta wisdom and Vedic healing, combination of Karma Yoga and Jnana Yoga. So I followed all the four, and I still follow all the four. I have specific timings where I do my meditation, my yoga, and my healings, and of course the Gyan sessions that we do. Yes. So perfect path is combination of all the four, if you can manage. And if you have a specific inclination towards one, that is also good. Absolutely no problem. So let us look into what will be the benefits in each of the path. Because see, the destination is same, the paths are different, so obviously the effects will be different, है ना? तो वो क्या effects हैं उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं अभी, right? So we will look into that now. So before that, anybody else who wants to share? Pooja ji, you just came, I thought you wanted to share something. Yeah, go ahead. मैं ये कह रही हूँ कि मुझे फील होता है कि ये कहीं ना कहीं मतलब सब जुड़े होते हैं। जैसे देखिए, जब हम भक्ति योग में चले जाते हैं तो ऑटोमेटिकली इट फॉलो द मेडिटेशन, एंड जब इन दोनों के बीच में हम जाते हैं तो अपने आप क्यूरियोसिटी आती है, तो नॉलेज जो है चारों तरफ से हमारे पास उसी से रिलेटेड आता है, तो इट विल स्ट्रेंथन आवर नॉलेज ऑल्सो, इट्स कॉन्सेंट्रेशन ऑल्सो, भक्ति ऑल्सो। और एक और चीज मैंने जो अपने आप पे फील की है कि जितने भी, जो आप विवेकानंद की बात करें, आप भगवान बुद्ध की बात करें, ये सब एक ही जगह पे पहुंच रहे हैं, और जो बेसिक चीज जो कहते हैं वो सब एक ही पे जाते हैं, मतलब जिसको एनलाइटमेंट आप कहते हैं, वो एक ही चीज पे जाते हैं, फिर उसके बाद उसको स्प्रेड करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। Okay, good. So that is a good understanding. Very good. See, as I said, the destination is same. तो सब में अगर आप बोले कि एनलाइटनमेंट है या समाधि है, दैट इज अ डेस्टिनेशन. सिंस पाथ्स आर डिफरेंट, द इम्पैक्ट और द इफेक्ट्स विल बी डिफरेंट. सो लेट अस लुक इनटू दैट इम्पैक्ट. कौन सा इम्पैक्ट कितना ज्यादा होता है, सो दैट वी आर क्लियर अबाउट व्हाट वी आर डूइंग एंड व्हाट विल बी द इम्पैक्ट. करेक्ट. तो अगर आप भक्ति योग में हैं तो सडनली आप ये नहीं बोल सकते कि डोंट एक्सपेक्ट दैट सम विजडम विल कम टू यू. सो व्हाट आर यू गोइंग टू गेट इन भक्ति योग? दिस इज द पाथ ऑफ लव, डिवोशन, सरेंडर, है ना? तो क्या होगा इसमें? You will experience divine love. So this is the path of love. तो aspect क्या है भक्ति योग का? Divine love. तो आप इसको equate कर सकते हैं. भक्ति is equal to divine love. Correct? When you are into the path of Dhyan Yoga or Raj Yoga, you will be actually doing what? Raising your consciousness from the Mooladhar or the root chakra to the higher chakras. है ना? To, let us say, third eye chakra. So I will not go to the Sahasrara. Let us stick to third eye chakra because that is the Sahaj Samadhi. तो सहज समाधि स्टेट में भी अगर आप जाते हैं तो थर्ड आई चक्र तक अगर आप पहुंचते हैं, दैट मीन्स यू आर रेजिंग योर कॉन्शियसनेस थ्रू द प्राणमय कोश, फ्रॉम द यू कैन से द linear rising of the consciousness from the Mooladhara to the third eye chakra. What is happening here? It is the path of Kundalini Shakti awakening. It is the fire energy. It is the fire of the Kundalini Shakti. Correct? Kundalini Shakti. Yeah. तो पहले में भक्ति योग में क्या है? फायर ऑफ डिवाइन लव. राज योग में क्या है? फायर ऑफ कुंडलिनी शक्ति. कुंडलिनी शक्ति की जो फायर है उससे आपकी कॉन्शियसनेस ऊपर उठ रही है. और ज्ञान योग में क्या है? इट इज द फायर ऑफ डिवाइन विजडम. So what is common to all the three? Divine love, divine light and divine wisdom. तीन एस्पेक्ट है ना. डिवाइन लव है, डिवाइन लाइट है, डिवाइन विजडम है, लेकिन तीनों में फायर एलिमेंट है. There is a fire which is raging inside, and that fire will burn up all the impurities in your chit. Correct? तो ज्ञान योग में fire of divine wisdom will burn away all the impurities. तो आपके संस्कार, आपके जो भी बीज फॉर्म में जो भी हैं, तामसिक संस्कार हैं, राजसिक संस्कार हैं या सात्विक हैं, वो पूरे जलते हुए जाएंगे. सीड को अगर जला देंगे तो दे विल नॉट जर्मिनेट फर्दर. बट नॉर्मली सीड क्या होते हैं? डोरमेंट होते हैं, जलते नहीं हैं. तो आपकी साधना में इतनी पावर होनी चाहिए कि उस आग से आपके उस बीज को अगर हम जला दें, देन यू बिकम फ्री फ्रॉम द यू कैन से योर चित्त. आपका चित्त जो है वो आपके संस्कारों से फ्री हो जाता है, एंड देन यू मूव अहेड टुवर्ड्स समाधि स्टेट. करेक्ट. तो भक्ति योग में क्या होता है? यू डिसॉल्व योर ईगो. भक्ति योग में व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू सरेंडर, when you are complete समर्पण में जाते हैं तो क्या होता है? ईगो डिसॉल्व हो जाता है. ईगो डिसॉल्व हो जाता है एंड द डिवाइन लव स्प्राउट्स, एंड इट
completely encompasses your whole being from the heart chakra, and then divine love के साथ आप भक्ति समाधि में चले जाते हैं. So bhakti yoga has that power. Yes. Hello. Am I clear? Am I audible? Yeah. Okay. Good. Yeah. So that is part of the bhakti. तो भक्ति में divine love है, और fire of divine love will make the transformation happen in your life. Yes. बट अगर कोई बोले कि मैं तो बहुत दिनों से 20 साल से 25 साल से मंदिर जा रहा हूँ, दिया जला रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, सत्संग जा रहा हूँ, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, तो क्या हुआ? साधना में वो फायर नहीं आया जिससे कि सीड्स जल जाए. तो अभी और उसमें साधना करनी है. करेक्ट? क्योंकि जब तक until that fire of divine love burns away all the seeds, there will be no transformation in your life. Can you get that? Yes or no? That transformation has to happen. अगर आप बोलो कि मैं 20 साल से मेडिटेशन कर रहा हूँ या 15 साल से मेडिटेशन कर रहा हूँ और मेरा गुस्सा कम नहीं हुआ, दैट मीन्स अभी गुस्से का जो बीज है वो एक्टिव है, डोरमेंट भी नहीं हुआ. और अगर डोरमेंट भी हुआ है तो वो अभी जला नहीं है. तो सीड उसका डोरमेंट है. अगर सिचुएशन कोई टफ सिचुएशन आएगी, आपको गुस्सा आएगा ही आएगा. सो योर एंगर हैज नॉट गॉन. So your sadhana has not become strong enough to burn away the seeds of anger. I'm only taking anger as a one particular example. Yes. तो चाहे वो मेडिटेशन से हो, चाहे वो ज्ञान योग से हो, राज योग से हो या भक्ति योग से हो, the fire has to burn away all the instincts, all the sanskars, all the vikars in your chit. That is the turning point, and that will take you to the state of higher consciousness and samadhi state. Okay, so I've said a few things. Let's have some discussion. If everything is clear, or if you have any questions, please go ahead. Anybody who has any question? Amitji, you want to share something for the benefit of all the people here? And welcome Anirudhji. बहुत दिनों बाद आए हैं. Yes. Not a question, but yeah, largely I think people in such sessions, the way this one is primarily attended by people who are more inclined towards Gyan Yoga, wisdom, for the obvious reasons, because this session is about more of This is Gyan. more about Gyan, yeah. So not about as much as bhakti and but I think in my life not bhakti as much, but primarily Gyan Yoga, Dhyan Yoga and Karam Yoga has been on the front seat. So I'm applying the combination of all three. I tried many times to get some calling towards Bhakti Yoga. I did some internal research and tried to awaken myself towards my devotion for Shiva and even Krishna consciousness. I think I could not get this there. And I think through Dhyan and Gyan and through sessions like this, like a lot of people have discovered God within their own selves. Within all of us, within you, Yes. within all these 14 people in this room, Yes. which did not require the visualization of an external form, Yes, shape, or deity or name. So I think very briefly, and I also believe that it's like, you know, these are four pillars. These are like four wheels of a car or a vehicle. सो ये चार पहिए गाड़ी के, और इन चारों में अगर हवा अच्छी रहेगी तो बहुत अच्छी जर्नी चलेगी. ठीक है, एक में, दो में, तीन में भी होगी तो ठीक रहेगी, पर चारों में अगर ठीक ठाक है तो ऑप्टिमम स्पीड, ऑप्टिमम एक्सपीरियंस होगा अगर चारों बढ़िया चल रहे. पर ऐसा भी, पर इट इज नॉट अ मैंडेटरी थिंग. समबडी कैन रीच समाधि थ्रू एनी ऑफ दीज वन ऑफ दी पिलर्स. Yes. सो एवरीथिंग इज इक्वली रिस्पेक्टेबल. सबकी अपनी कॉलिंग है. Yes. But I think that's my humble submission. Absolutely. Perfect. Great. So there is absolutely no hard and fast rule that you have to follow all the four. इसलिए मैंने कहा किसी की एक liking है तो है. So that is your calling, because possibly bhakti is not the calling for you, bhakti yoga. But it's not that you are averse to it. It's absolutely fine. है ना? तो it's good. अगर आपकी calling राज योग में है, meditation में है और ज्ञान योग में है and कर्म योग में, I know you are a great कर्म yogi, so I know that. During COVID times, since then I know that you have been a ardent Karam yogi who can go to any level of
action selflessly. So that is absolutely perfect. There's no need. There's no need. But if there is a calling, go ahead. That's it. Simple. बहुत बढ़िया अमित जी. Great. Anybody else who wants to share? Anybody else who wants to share or ask any question? You are free to do that. Yes. Now, the only one major difference between, you can say, the Bhakti Yoga and the Gyan Yoga is, as I said before, Bhakti Yoga is about Saguna Sakar, then Ishwar in name and form. So you have the Lord Krishna, the Lord Rama, and the Devi Ma, and so there is a name and there is a form. You are worshipping that. But in Gyan Yoga, you are basically doing the Nirgun Nirakar. That means formless, nameless, energy. So you can use that as a divine light, or it's simply divine in without name and form. So then that is what we call in Advaita Vedanta, we call that Brahman. So Brahman is the Nirgun Nirakar form, which is the essence of all the Saguna Sakar form. तो पहले निर्गुण निराकार है, उसके बाद सगुण साकार है, और उसके बाद पूरी सृष्टि है, and then the whole universe, and then the world, and then the jiva, and everything. Correct? So you can relate to it in whichever way you can, you want to. तो ज्ञान योग और भक्ति योग में एक स्लाइट डिफरेंस यहाँ पे है. एक सगुण साकार है, एक निर्गुण निराकार है, which is absolutely fine. So whichever way you want to connect with the divine, you have a full choice to do that. Anybody else who has any question? Just share what is your experience of your journey. आप अभी तक कौन सी जर्नी पे थे, या आपका एक्सपीरियंस क्या है? अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो उससे क्या आपको फायदा मिला है? क्या आपका स्पिरिचुअल जर्नी किस स्पीड पे है? सो these are the things that will which can increase your you can say the speed of your spiritual growth, or you can get a booster dose for your spiritual journey. So these are the 4 paths. Normally these are the 4 paths which we talk of, right? Yes, Bhavna ji, you want to share something? नमस्ते टू एवरीबॉडी. नमस्कार जी. मैं जो पाथ चूज कर रही हूँ मेरा भक्ति योग ही चल रहा है. पहले बीच में कुछ साल ज्ञान योग पे भी थी कि गीता जी पढ़ती थी. गीता जी पढ़ने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि इस्कॉन टेम्पल के भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के साथ जुड़ी तो जाप करने लग गई. अभी जाप करते करते पर फिर कुछ हुआ ऐसा कि नहीं होता जाप. लाइफ की कुछ डिफिकल्टीज ऐसी आ जाती हैं जीवन में कि जो आप निरंतर किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे कर रहे थे वो नहीं कर रहे हो. लाइक माई मदर गॉट कैंसर, और मुझे उनके लिए भागना होता था, तो वो जो मैं बैठ के करती थी वो छूट गया. बट वो जो मैं वर्बल करती हूँ इंटरनल के, मैं मेट्रो में बैठी हूँ तो मैं जाप कर रही हूँ, और मैं घर में वहाँ हॉस्पिटल में बाहर बैठी हूँ तो मैं जाप कर रही हूँ, वो चीज से जुड़ी हुई हूँ. अभी वो वाला छूट गया जो मैं प्रॉपर करती थी. बट अभी वो वाला शुरू है कि हाँ, जब 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 ध्यान आ रहा है, खाली हो रहे हो आप जुड़ रहे हो. तो पर अभी मुझे लगता है कि जो आप बताते हैं मेडिटेशन, जैसे अभी भी अवगुण है, आ जाता है गुस्सा. अगर बहुत सारी चीजों पे नहीं आता, सपोज 99 टाइम्स गुस्सा नहीं आया, बट 100th टाइम कुछ ऐसा हुआ कि गुस्सा आ ही गया. वो एक अवगुण ऐसा है कि लगता है कि बहुत बड़ा है, जो नहीं गया इतने टाइम से दोनों चीजें करने पर, कि ज्ञान योग में भी आए और भगवान जी के साथ भी जुड़ रहे हैं, बट अपने अवगुण जो ये वाले हैं ना, ये नहीं जा रहे. तो क्या मेडिटेशन से जाएंगे या निरंतर इसी पर चलते रहें और धीरे धीरे चले जाएंगे? So first of all, let's acknowledge Bhavna ji. Very good spiritual journey and very good question. So this is a question which has plagued humanity since eternity, I would say. कि क्या मेरी साधना सही है, क्या ये जो अवगुण है नहीं गया, ये क्यों नहीं गया, क्या मेरी साधना में दम नहीं है. So these are the questions or doubts which come. तो पहली बात तो इस डाउट को बिल्कुल हटा के बाहर फेंक दीजिए. ऐसा कोई बात नहीं है जिसमें कोई भी डाउट होना चाहिए. नंबर 1, जो भी आप कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि आप उस 0.01% में से हैं जो इस कम से कम साधना कर रहे हैं. 99.99% तो साधना कर ही नहीं रहे हैं. तो अगर आपकी साधना हो रही है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, आप कई जन्मों से आपने साधना नहीं की है, तो बहुत कई जन्मों के कर्म हैं जो आपको काटने हैं. तो इस जन्म में अगर आप जागृत अवस्था में आ गई हैं और साधना कर रही हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल डू दिस, यू आर डूइंग ए ग्रेट जॉब.
राइट। Okay. और अगर 100 में से 99 बार आपको गुस्सा नहीं आ रहा है और एक ही बारी गुस्सा आया है, तो आप मान के चलिए अगर आपने एक एग्जाम दिया, उसमें आपके 100 में से 99% मार्क्स आए, तो आप हंसते हैं या रोते हैं? हम्म, अरे खुश आप होते हैं कि हो सकता है टॉपर हो, 99% किसी के आए ही नहीं है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू, इन दिस स्पिरिचुअल जर्नी यू हैव टू एक्नॉलेज वॉट एवर यू डू, डोंट बीट यूर सेल्फ अप फॉर वॉट यू हैव नॉट डन। सबसे पहला रूल ये है, जो कुछ नहीं हो रहा है उसके लिए अपने आप पिटाई नहीं करनी है, जो हो रहा है उसके लिए अपने आप को एक्नॉलेज करिए कि आपने कम से कम 99 सिचुएशंस तो ऐसी पार कर ली, यहाँ पे आपको गुस्सा ही नहीं आया। कोई तो गुस्से में 24 घंटे रहते हैं, और पिछले 50 साल से ऐसे ही हैं। तो कोई 50 साल से अगर रोज गुस्सा कर रहा है, तो उसका नतीजा क्या होगा मालूम है आपको? या तो ब्रेन स्ट्रोक होगा, या हार्ट अटैक होगा, या किडनी फेलियर होगा, या स्टोन्स बनेंगे गॉल ब्लैडर में और किडनी में। तो दीज आर द इंडिकेशंस ऑफ stored anger in the body. So if your system is good, और अगर गुस्सा आ गया तो इतना बुरा मानने की क्या बात है? गुस्सा है, इमोशन है, ह्यूमन इमोशन है, समझो उस बात को, गुस्सा क्यों आ रहा है, एंड अवेयरनेस में आ जाओ। सबसे पहली चीज होती है कि आप पूरे अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस में आ जाओ कि मेरे को ये इमोशन एक्सपीरियंस हो रहा है, और डोंट से आई एम एंग्री, से आई हैव ए फीलिंग ऑफ एंगर। दोनों में फर्क बताइए मेरे को। ठीक है। आई एम एंग्री और आई एम हैविंग ए फीलिंग और आई एम हैविंग एन इमोशन ऑफ एंगर, इन दोनों में फर्क क्या है? मतलब एज अ पिक्चर आप देख रहे हो, एक चीज होता है कि आप कर रहे हो, एक चीज होता है कि ये पिक्चर चल रही है और मैं इसको ऑब्जर्व कर रही हूँ। ओके, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। हाँ, आई हाँ। हैव ए मोबाइल। हम्म So now if I have a mobile, next moment I can keep the mobile aside and I say I don't have a mobile. Yes or no? Correct. So when I have something, I can drop it whenever I want. But if I say I am mobile, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कैद में आ गया एंगर के। I am angry, अब मैं एंगर के कैद में आ गया हूँ, फंस गया हूँ एंगर में, अब मैं एंगर से बाहर छूट ही नहीं सकता। But if I say I have anger, I can drop that anger. है ना। तो थोड़ा सा अवेयरनेस में लाना है कि गुस्सा आ रहा है, आने दो, कोई बात नहीं, अभी मैं कोई एक्शन नहीं लूंगी, कोई बोलूंगी नहीं, कुछ नहीं बोलना, कोई डिसीजन नहीं लेना, कोई एक्शन नहीं लेना। एंगर आएगा, आप देखोगे एंगर को, और एंगर चला जाएगा, बात खत्म होगी। तो एंगर एक्सप्रेस नहीं होगा, सप्रेस भी नहीं होगा, एंगर डिसॉल्व हो जाएगा। दैट कम्स विद साधना। रोज सुबह निरंतर जो हम आप जो रोज सुबह आप जब कर रहे हैं, जो हाँ मेडिटेशन जी। कर रहे हैं, करते रहिए, धीरे धीरे आप देखेंगे आप अपने एंगर को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, और एक्सप्रेस भी नहीं करना है, सप्रेस भी नहीं करना है, वो अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आप उसे देख रहे हैं, आ रहा है, और देख रहे हैं, जा रहा है, बात खत्म। दैट इज हाउ यू ऑब्जर्व योर इमोशन एंड गेट फ्री फ्रॉम दैट। तो साधना में कोई ठीक है। कमी नहीं है। हाँ, अगर आप बढ़ाना ठीक चाहें है। तो जरूर बढ़ा लीजिए। मेडिटेशन 15 मिनट करते हैं, आधा घंटा करिए, आधा घंटा करते हैं तो 1 घंटा करिए, ये जरूर बढ़ाना है हमको रोज, धीरे धीरे। राइट, जब बढ़ाना है, एक पर्टिकुलर टाइम पर बैठ के डिवाइन से कनेक्ट होना, वो जैसे होता है चलते कि हम फिरते, एक उठते आठवीं बैठते, खाते पीते, हाँ, कभी भी कनेक्ट हो सकते हो आप डिवाइन से। कि भक्ति योग का बस मतलब वो क्या हो है? जाता है। आत्मा परमात्मा के साथ कनेक्टेड है, शरीर को जो काम करना है करते रहो। शरीर से खाना बना रहे हो, खाना बनाओ, बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ाओ, ऑफिस का काम है, ऑफिस का काम करो, घर का काम है, घर का काम करो, लेकिन आत्मा परमात्मा में लीन है। दिस इज द स्टेट ऑफ मेडिटेशन इन भक्ति योग। और जब टाइम ओके। मिले आप जब कर लो, पर भगवान के साथ कनेक्टेड हो, डिवाइन के साथ हमेशा कनेक्टेड हो। शरीर से जो काम करना है करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मम्मी की, आपको मदर की देखभाल करनी है, हॉस्पिटल में हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप कनेक्टेड किससे हो? भगवान से कनेक्टेड हो, अंदर जाप हो रहा है, बहुत बढ़िया है। राइट, दिस इज हाउ यू प्रैक्टिस योर साधना। देयर इज नो फिक्स्ड वे ऑफ डूइंग इट, जो आपको सुविधाजनक है वो ही सही है। ठीक है जी, थैंक बहुत बढ़िया थैंक भावना यू जी, थैंक यू थैंक यू फॉर थैंक यू। sharing this so that it became clear for everybody. And the only thing I will again repeat is, जो भी आप कर रहे हैं उसके लिए अपने आप को acknowledge करिए, जो नहीं कर रहे हैं उसके लिए अपनी पिटाई नहीं करनी। Be mild with yourself, be mild and be very, you can say,
क्या बोलेंगे उसे, टॉलरेंट विद योरसेल्फ. हाँ, यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. लेट्स एक्नॉलेज भावना जी. एनीबडी एल्स हु हैज एनीथिंग टू शेयर? यस, गुरकीरत जी. Okay, we will be reaching the scheduled time now, closing time. Before that, anybody who wants to share your spiritual journey, your practice, anything you have any doubts or any question, you're free to ask. I think one observation now, I think these 4 paths, if one starts to talk and discuss, this 15 minutes each or 10 minutes each perhaps is way too less. So I was thinking that maybe next time what we can do is dedicate one session for one of the paths each time. Because, for example, we can definitely do that. We can definitely because, for do example, that. I feel like talking about very holistically about, for example, what Gyan Yoga can include, what are the different disciplines and scriptures, and with various ways within Gyan Yoga, and also various ways within Dhyan Yoga, and also various ways within Karma Yoga, and likewise Bhakti Yoga. I think so, because इस 1 घंटे में चारों को ढंग से complete कर पाना, that was my. This was more like an introduction, right? Yeah. And as you are aware, when we talk of Gyan Yoga, we are planning a big spiritual retreat in Rishikesh for 3 days, which is completely based on Gyan Yoga, right? Right. Yeah. And when we are talking of, we have conducted sessions in Wednesday group only. We have conducted the 8 sessions on 8 limbs of Patanjali Yoga Sutra. That is completely Raj Yoga. तो राजयोग के ऊपर हम बात कर चुके हैं. We have talked very few, elaborate sessions on बुद्धास ज्ञान योग. तो बुद्धिज्म में जो ज्ञान योग है उसके ऊपर हमने बात करी है, right? So we have done that, but yes, we can again do that. Not a problem at all. Yeah, because I think most of the audience is different now, and repetition. Definitely, we will do that. Very सबसे पहले spiritual retreat से होके आते हैं हम, उसके बाद फिर full charge of battery. In fact, we are planning a complete new program on advanced level of Vedanta wisdom after that. So those who are interested in Gyan Yoga will have an opportunity. If they cannot come for the retreat, definitely they should come and participate in that program, and that will be absolutely wonderful for them. So definitely we'll be coming up with the programs, either in the Wednesday session or in the weekend programs, the paid programs. We will come up with that. Yes, point well taken, Amit ji. We will definitely have detailed of it. आज तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था कि 4 पाथ कौन कौन से हैं. सबको इतना ज्ञान हो जाए कि वो कौन से मार्ग पे चल रहे हैं, इतना स्वाध्याय कर लें, इसके लिए आज ये था. राइट, वेरी गुड अमित जी. लेट्स एक्नॉलेज अमित जी. Thank you. यस अनिरुद्ध जी, बहुत दिनों बाद आए हैं. एनीथिंग यू हाँ वांट जी, टू हाँ जी शेयर? सर, बस मैं यही शेयर करना चाह रहा था कि योग जो है, जो आपने बताया कि सोल का जो है कनेक्शन विद द डिवाइन, और उसके साथ साथ जो माइंड और बॉडी है वो भी डिवाइन के साथ अलाइन होनी है, तब कंप्लीट योग का मतलब हो जाएगा. हमारी बॉडी और माइंड भी अलाइन होना चाहिए डिवाइन के साथ. जो काम जो हम कर रहे हैं वो डिवाइन से की गाइडेंस में करें, हमारा माइंड और बॉडी उसकी गाइडेंस में काम करे और सोल उसके साथ मिल जाए. दैट इज आई फील योग है. मेथड तो बहुत हैं, कोई सा भी जो मेथड अच्छा लगे उसको फॉलो कर सकते हैं. तो आप कौन सा मेथड फॉलो करते हैं बताइए? मैं तो सारे, ऐसा लगता है सारे ही करता हूँ. वेरी गुड. सो दैट्स अ परफेक्ट वे, है ना? तो एब्सोल्युटली गुड. एंड दैट इज एसेंस, बिकॉज हर पाथ में थोड़ा सा डिफरेंट है हाउ वी कनेक्ट विद द डिवाइन, है ना? तो इसीलिए अभी मैं उस पर बात नहीं करूंगा. बट अगर आप सारे पाथ कर रहे हैं तो यू वुड बी क्लियर कि कनेक्शन हर एक का अलग अलग होता है. मेरा जो समझना था वो मैंने बताया. हाँ, बिल्कुल सही. हाँ, कि हमारी बॉडी और माइंड को भी उसके साथ अलाइन होना है, तभी कंप्लीट योग में जाएंगे. एब्सोल्युट परफेक्ट है. अगर आपकी ये अंडरस्टैंडिंग है, बहुत बढ़िया है. राइट, लेट्स एक्नॉलेज अनिरुद्ध जी. बहुत बढ़िया. एनीथिंग एल्स, एनीबडी हु वांट्स टू आस्क और एनी शेयर बिफोर वी क्लोज डाउन द सेशन? Sir, can you give us the brief on how the trip will go about? We will talk subsequently, but in anything specific that you want to ask, because all the details are already given in the group. मैं group में सारी details दे रहा हूँ, कल भी डालूंगा उसमें. Okay. Itinerary already बताया हुआ है. Okay. So 6:30 I have to reach Indrapuram, right? Yes. Okay. पॉइंट आपको बताए हुए, आप 6:30 बजे आएंगे फ्राइडे को सुबह.
And from Okay, there, okay. the vehicle we will board the vehicle, and then we will go to the Okay, resort. okay. Okay, And we sir. will come back Okay, to the sir. same place on Sunday evening. Okay. और कुछ है Okay. तो 1-to-1 पे बात कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बाकी Sure, सारे लोग अभी sure. रिट्रीट में नहीं है. Vijay Sure, ji sir. has a Anything mischievous I have smile, to. so he knows that he is part of it. हाँ. Okay. Anything I have to keep with myself, like I have to bring with me. चेकलिस्ट एक बार देख लेना आप, मैं कल सुबह तक एक और बार डाल दूंगा. Okay, sir. Okay, sir. Thank you very much. Yes. Okay. Okay. Anybody else who wants to share? Wednesday session. Yes. Wednesday session के ऊपर किसी को कोई सवाल, कोई डाउट, कोई sharing? Most of the people have shared, I suppose. Yes. All right. Galaxy A23 कौन है? शेयर करना चाहेंगे कुछ? आपने अनम्यूट किया है. Anything you want to share? Please go ahead. Okay. So if there is nothing else, then we will close the session. Yeah. All right. So thank you very much for your presence and your participation. Yes. वंदे मातरम सर. हाँ जी. सर आपने एक डिफरेंस बताया भक्ति योग और ध्यान योग के अंदर, राजयोग के अंदर. दैट इज व्हेन इट इज भक्ति योग, इट इज बेसिकली. आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है कपिल जी. आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है. ओके ना? इज इट ओके ना? एम आई ऑडिबल? थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है. चलिए कोई बात नहीं. गो अहेड. नो, इज इट ओके नाउ? हाँ बोलिए आवाज आ रही है. So, Bhakti Yoga, when you say it is Sagun Sakar, and when we get into this meditative form, it is Nirakar, basically. हाँ, Nirgun Nirakar is Gyan Yoga. Yeah. Nirgun Nirakar is Gyan. But sir, when I listen to Bani, तो वहाँ पर तो Listen to? ultimately Bani, good Bani, you know. Good Bani, that हाँ. So it is basically, I think it is also the Bhakti Yoga, but with the निराकार की हम बात कर रहे होते हैं. दैट इज सेवा भी. और सिंपल है सर. अगर निर्गुण निराकार है तो वो आपका ज्ञान योग में है, और अगर सगुण साकार है, किसी नेम एंड फॉर्म में आप उनकी वर्शिप कर रहे हैं, तो वो भक्ति योग है. इतना ही है. ओके, ठीक है. दैट्स इट बेसिकली. ठीक है. एंड भक्ति योग का बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है कि यू आर डिवाइनाइजिंग ए ह्यूमन रिलेशनशिप. ओके. और यू कैन से यू आर ह्यूमनाइजिंग ए डिवाइन रिलेशनशिप. जैसे अगर आप श्री कृष्ण को कैसे याद कर रहे हैं कि इज ए नंद गोपाल, so you're as a child, so you are worshipping Krishna as Lord Krishna as a small child, so you can see Lord Krishna in your son or in your daughter, right? So you are divinizing a human relationship and you're humanizing a divine relationship. That is bhakti yoga. So you can actually, if you understand what I'm trying to say, या राम लल्ला हैं, तो भगवान राम को आप कैसे याद कर रहे हैं? राम लल्ला हैं, छोटे से राम लल्ला हैं, and you are in love with that child form of Lord Ram. Get my point? That way. तो नेम एंड फॉर्म में अपनी मर्जी से somebody can worship. जैसे कबीर दास या नानक देव जी, जो वो उन्होंने जो बानी, जैसे हम कर तेरे दरबार, तो वो निर्गुण के लिए बात कर रहे हैं. वो सब दिस सिंगिंग शब्द बानी में ही चल रहा है. तो आई हैड दैट अंडरस्टैंडिंग कि ये भक्ति योग में आता है शायद. अगर आप गुरु नानक जी को याद कर रहे हैं तो वो भक्ति योग है. नहीं, गुरु नानक जी जो चैंटिंग कर रहे हैं, सिंगिंग कर रहे हैं, वो निराकार के लिए कर रहे हैं. बिल्कुल. एंड वी आर रिपीटिंग दिस थिंग एंड वी आर नॉट ह्यूमनाइजिंग. मतलब वो तो जैसे कबीर जी ने बोला, या जिन्होंने भी बोला, जैसे आपने कुछ बोला, कि जो बोला कि आपने कुछ बोला, तो इट इज नॉट दैट आपने जो कोई शब्द गाया, भजन गाया निराकार के लिए, तो वो जो शब्द वाणी में निराकार चल रहा है, तो मुझे ऐसा लगा कि वो भक्ति योग में आता है. बट व्हेन यू से दैट इट इज दैट राजयोग, तो देन ओके फाइन. आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं थी. तो राजयोग है या ज्ञान योग है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा आप क्या बोल रहे हो. लेकिन सब इतना ध्यान रखिए, आप अगर वर्शिप कर रहे हैं, किसकी वर्शिप कर रहे हैं? नेम एंड फॉर्म में है तो भक्ति योग है. नेमलेस एंड फॉर्मलेस है तो वो ज्ञान योग है या राजयोग है. बिकॉज यू आर सीइंग गॉड एज ए लाइट, divine light, divine love, divine wisdom. These are the only three options.
Yes. Okay. 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 Divine love is bhakti. Divine wisdom is Gyan. Divine light is Raju. Simple है. All right. All right. ठीक है. Noted. Right. Anybody else wants to share? All right. So we have crossed the scheduled time. So we'll close the session now. So thank you very much for your participation, and hope you had all of you got value from this program. So enjoy a great week, and we come back from the spiritual retreat with more power and more wisdom, and then we come for the next Wednesday session with a lot more. Till then, Aham Brahmasmi. Enjoy, take care, good night, God bless. Brahmasmi. We are giving Shubh Kamana. Thank you. Make अच्छा, the Sirat best ma'am of है. it. Okay. Galaxy Yes, A23. make the Sirat best ma'am. of it. Thank you. Thank you, Yes, ma'am. Guru. Thank you for your best wishes. Thank you. Good night. Bye-bye.